Hi everyone. Yes, we are going to start in like 4 minutes. Like we'll start at 8:10 sharp. I am waiting for others to join in. Once they are in, we'll be starting up with it. Okay. Do this. Okay. How curious you guys get to tend if I am disappeared even for a minute more. Okay. I hope you guys are able to hear me. Okay, so we are going to have regular classes and sorry, I think I miscommunicated something in the last session. Wherein the thing is that the videos are not recorded for these particular sessions. That is the reason we are having regular live classes. Okay, so there is basically like the agenda today is that there are three things that I need to discuss. Like I have 3 days to cover that up. We'll have strings, we'll have list, we'll have tuples, sets, and dictionaries. Okay, so these are three different things that needs to be covered up. Okay, just allow me a moment. Let's get started. I'm gonna start with sharing my collab notebook and we'll start with strings. ठीक है मतलब strings में everything like starting from the basics of the strings, going to the string object like single string, double quotes, and multi-line string, then the inbuilt function related to the strings. We also will dive into splitting and joining of the strings and string format function. So all of this that will be discussed today, and if we get a like bandwidth, we are going to start up with the list methods as well. Okay. So, and how many of you know that string itself is like we have an entire module also for string? Yes, Kathy, it will be posted. Okay, so we have an entire module of string. That is also something that is there in our agenda, and we'll be doing that as well. Okay, allow me a moment. I'm going to start with sharing my screen. I have a lot of things open on my screen. I need to just quit those up. Okay, a new collab notebook. Yes, the videos will be updated, and also you will basically get like the notebook as well, like whatever resource I'm using today, that will be given to you. So that is like how it is. Okay, so just a second. Yes, Aurangzeb, मैं जो भी आपके डाउट्स है, yes, I'm gonna like use आधा English आधा हिंदी. ठीक है, so do not worry. Okay, and whatever is your doubts, ठीक है, we have an entire doubt solving session for on Sunday, and by end of the session also I will try to take up your doubts. ठीक है, but like जब हमारा agenda discuss हो रहा है तो let's keep it on the agenda only. So basically we will not get videos on these topics that you are teaching in a regular class. Yes, yes. So because it's not been recorded, so that is the thing. I was a little confused. Can you please share this weekly time for timetable for this course? So today we are going to do strings. Tomorrow we have lists, and post that we have tuples and set and dictionaries. Okay, so these are like the three topics which has been there, and I can like I'm going to try to cover up more and more the more possible, and post that on Sunday we'll have a doubt solving session. Okay. Yes, Manish, I will take up all the doubts, but let's start with the agenda for the day. Okay. So to start with, we'll start with the strings part. Okay. No, it's not, Sudarshan. I was updated about the topics today itself. So that is the reason. Do not worry. Functions will also be covered up. But we have certain topics which have been set for this particular week, and that is something that I will be covering up for this particular like set of session. Okay? And मतलब ये पूरे week का जो agenda है that revolves around list. Okay, now starting with the strings. See, we have been introduced with single quote and double quote. हमारे पास values जो होते हैं हम या तो single quote में दे सकते हैं या तो double quote में दे सकते हैं. Okay, but we also have something called as like multi-line strings. Okay, for example, if I want to print a single using the single quote, that is also possible. Strings is an object which is denoted with basically what? It's been denoted with quotation mark. It can be a single quote or it can also be a double quote. Okay, it can also be a double quote. However, we want to give both are going to print out the same thing. Then we also have something called as multi-line string. Yes, I have increased the size of it. I hope it is visible to you now.
or you want me to increase it more? Okay, I believe it works. Yes, Manish, it is related to what? Ma'am, string के साथ number कैसे print करते हैं? Nothing. It's just that if you want to print a number with a string, all you can do is आप उस string के अंदर एक number डाल सकते हो, because string is something that उसके अंदर आप कोई भी values डाल सकते हो. Like you can put numbers also, you can put a boolean value also. Everything will be calculated as a string. ठीक है? No, there is no difference between any of this. Like आप single quote से भी denote कर सकते हो, double quote से भी denote कर सकते हो, but there is something called as multi-string line. Okay. Now, what is multi-string line? अब समझो that मेरे पास एक particular code है, मतलब एक text value है, जिसमें मुझे values को ना मतलब बिल्कुल इसी तरीके से print करना है. I wanted to print out exactly like this. ठीक है, मतलब next line में I wanted to be printed. इस सेम चीज को अगर आप सिंगल कोट के अंदर पुट करोगे ना, तो इट विल बेसिकली थ्रो एन एरर. अगर आप इसको एज इट इज रन करने की भी कोशिश करोगे ना, इट्स गोइंग टू थ्रो एन एरर. ठीक है. नाउ अगर आप डबल कोट में भी करोगे, स्टिल इट विल थ्रो एन एरर. इन ऑर्डर टू print an object like this, we need multi-string. Multi-string is denoted with triple quotes. ठीक है, it will start with triple quotes, चाहे वो डबल कोट हो चाहे सिंगल कोट हो, and it will also end with triple quotes. ठीक है. Now when I run this, it will allow it to run it. ठीक है. अगर आप क्लोजली इसका आउटपुट देखोगे ना, यहाँ पे स्लैश एन करके कुछ आ रहा है. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्लैश एन ओवर हियर. लेट्स ट्राई टू स्टोर दिस इन अ वेरिएबल. ठीक है, लेट्स कॉल इट एज अ सेंटेंस is equals to. ठीक है, हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, एंड लेट्स प्रिंट दिस यूजिंग द प्रिंट फंक्शन. यू विल सी द मैजिक व्हेन वी प्रिंट इट यूजिंग द प्रिंट फंक्शन. यहाँ पर क्या हुआ है, इफ यू आर एबल टू सी, जहां जहां पे स्लैश एन था, that has come on the next line. ठीक है. I am pretty much sure that in the previous few sessions मैंने बात करा था strings के escape characters के बारे में. Do you remember escape characters के बारे में we were talking about? Yes. So in the string we have something called as escape characters. Okay. यहाँ पे नए लाइन पे आने के लिए, if you want to come to a new line, the escape character is /n. ठीक है, the escape character will be /n, which will basically help you to come to a new line. ठीक है. यहाँ पर if you see /n is coming up. ठीक है, /n is nothing but it's making it come to a new line. So multi string line मतलब आप अगर इस particular text value को double quote के अंदर भी put up करो, if you put up this particular value inside double quotes as in 3 times repeated double quote values, ठीक है, तो भी ये बेसिकली इसे प्रिंट करने के लिए अलाउ करेगा, और हर जगह पे एक /n नाम का एस्केप सीक्वेंस आएगा. देन हाउ वी कैन गिव मल्टी लाइन कमेंट. मल्टी-लाइन कमेंट कैन आल्सो गिवन यूजिंग दीस 3 ट्रिपल कोट्स देयर. ठीक है. एक्चुअल में वो उसे एज अ कमेंट नहीं कैलकुलेट करता, वो एक्चुअली उसे एज अ लाइक टेक्स्ट वैल्यू ही लेता है. ओके. कमेंट्स आर गिवन यूजिंग हैशटैग्स इन पाइथन. ठीक है, कमेंट्स आर गिवन यूजिंग हैशटैग्स इन पाइथन. एंड इफ इन केस यू वांट टू, हेलो, कैन यू हियर मी? Somebody saying that my voice is not coming up. Is it fine? Is it coming? I think it is coming for people. ठीक है. पाइथन में कोई स्पेसिफिक कमेंट के लिए, मतलब ट्रिपल कमेंट्स के लिए, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए देयर इज नो लाइक कोई हार्ड कोडेड सिंटैक्स नहीं है. बट हम क्या करते हैं, जब हमें फंक्शंस के अंदर कमेंट्स देने हैं ना, हम ट्रिपल कोट्स मल्टी लाइन कमेंट ही यूज करते हैं. मतलब ये जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स है, इसी को हम वहां पे यूज करते हैं. दैट इज व्हाट इज बीन यूज्ड देयर. ठीक है. देयर इज लाइक नो अदर सिंटैक्स फॉर इट, बट आप ट्रिपल कोट्स को ही करते हो. ठीक है. Hashtag is for single line comment. Exactly. Bhaskar Jha, like he's saying that quotes are for multi-line comment. Yes, that is true. Multi-line string भी बोला जाता है इन्हें, और multi-line comment भी बोला जाता है. That is because हमारे पास कोई भी hard coded syntax available नहीं है for basically making it any kind of multi-line comment. Now, let's start to learn a little more about the different kind of, like
हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एस्केप कैरेक्टर्स है. सो लेट्स स्टार्ट नोइंग अबाउट इट. ठीक है, लेट्स ट्राई टू लर्न इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक सेंटेंस टाइप करना है, he said that she will be late. ठीक है, if I want to print this using, let's say, double quotes, or maybe I want to print this using single quote. ठीक है, can you see this? Let me put this in a variable. This sentence is throwing some kind of an error. The red line itself, it's making sure that there is some kind of error. ठीक है, it's confirming कि कुछ error है. जब आप इसे रन करोगे, आपको दिखेगा that error आया है. Now, in order to avoid this error, हम escape sequence use कर सकते हैं slash. We can use the escape sequence slashes. Then it will go ahead and allow us to print that particular value. ऐसे ही हमारे पास और एस्केप सीक्वेंस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके स्टेटमेंट में बैक स्लैश प्रिंट करना है, तो आपको डबल टाइम बैक स्लैश देना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको आपके स्टेटमेंट में डबल कोट्स प्रिंट करना है, तो आपको बैक स्लैश एंड डबल कोट्स देना पड़ेगा. ठीक है, वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज स्लैश टी, which is basically used in order to give a tab. ठीक है, so these are the different type of escape characters. Slash n is basically, we already saw it, slash n is for new line. ठीक है, it's for new line. We have more escape characters which are available, and but these are the escape characters which are like extensively used in your tab space between words. Yes, exactly. Slash t is for tab space. These escape characters are basically the widely used one. Okay, this is basically widely being used. Okay, now let's, like, while learning, like these basic things, let's solve small problems as well, side by side. Okay, for example, let's say that I have a particular string. Okay, I want to write a particular program in order to calculate the length of a string. Okay, but you all know, right, length of the string कौन से function से, कौन से built-in function से हम calculate कर सकते हैं, which built-in function can be used in order to, yes, exactly. But I don't want that. I don't want you to use the default function. Okay, let me put up the question here. I don't want you guys to be using the default function here. Okay, can you tell me the logic how you guys can do it? Okay, assume that my sentence is, assume that my sentence is this. ठीक है, कहाँ गया, sent is equals to, this is my sentence. Okay, and also let's just print the default length just to make sure that जो हमारा sentence का length है, that's coming out to be like same. ठीक है, so how will we do it? We will start with, like, somebody saying, पहले हम क्या करेंगे, we will start with like initializing a number which will be called as the length. ठीक है, ये किससे start होगा, it will start with 0, right? Okay, post that, next thing what will we do over here, we will basically move ahead and we'll run a loop for I in the sentence that we have. Okay, and we are going to increment the length plus equals to 1. Okay, and finally we'll exit and we'll print the length of it. Okay, so that's how we can basically get the length of the entire string, which will eventually be stored in the variable length. Okay, so yeah, that's how the logic will work like. Okay, now let's take up another problem. Let's say that I want to count the number of characters in a particular string. Okay, assuming that I have a particular string, okay, and I want to calculate the number of a particular character in a string. Okay, just a moment. Let me give you the string. Okay. मतलब frequency calculation करनी है एक तरीके से, that कितनी बार repeat हो रहा है.
Yes, in the length function and in string itself, Manish, हर एक वैल्यू को एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है. We give a index number to each value. ठीक है. Likewise, over here also we have given a like blank space को भी एक particular value दी जाती है. So this is basically the sentence. I have sent it in the like chat. Okay. And the program is that I want you guys to write a program to count the number of, like, let's say that मुझे frequency counter create करना है, and in this sentence I want you to count the number of diamonds. कितनी बार diamonds repeat हो रहा है. Yes, you can also take the user input. I don't mind. ठीक है, you can also take the user input in order to, yeah, for like कौन से number का calculation करना है या कौन से value का calculation करना है. You can also take the number input from the user. Tell me the logic. I'll start building that then. I see answers coming in. Like we'll accept the input from the user. ठीक है. Like Akshay has given me the most easiest answer, which is basically using the find function. But Akshay, try to understand the question. What I want is, I basically want to like count the frequency of the characters in the provided string. My bad. The question which I said was in a wrong way. Okay. Read the question correctly. Again, sorry. Let's like forget what I said earlier. Okay, forget what I said earlier. Question takes a read karo. The question says that calculate the number of each, like frequency of each string, each character in the string. मतलब I कितनी बार repeat हो रहा है, N कितनी बार repeat हो रहा है, C कितनी बार repeat हो रहा है. That is what I want you guys to count. यहाँ पर है ना, actual में we will be using dictionaries here. ठीक है. ये प्रॉब्लम को आप बिना डिक्शनरी यूज करे सॉल्व नहीं कर पाओगे. Okay. I see that Ayush, the answer that you have given is very nice. Please dry code भी कर लो, करके दिखा दो. Actually, let's skip this one because यहाँ पर क्या है ना, like you will have to either I'm going to give you a smaller sentence. ठीक है. To show you the dry code, I'm going to give you a smaller sentence. ठीक है. Again, let's take this sentence itself. वो bigger sentence है, वो काफी बड़ा sentence है. What I want is, guys, I want you people to look for, just a second, let me share my whiteboard, okay? I think I was on my home page itself. Ha. What I want here is, I want you guys to find out the frequency of characters. मतलब जो आउटपुट है ना, वो एक तरीके से मुझे चाहिए जो आपका आउटपुट आए वो बेसिकली एक लाइक डिक्शनरी फॉर्म में हो. ठीक है. इट्स सपोज टू बी इन अ डिक्शनरी फॉर्म, समथिंग लाइक आपका डिक्शनरी जिनका कवर्ड है, जिन्होंने ऑलरेडी डिक्शनरी करा हुआ है, दोज पीपल विल बी एबल टू सॉल्व दिस अप. दैट इज द रीजन आई वाज विलिंग टू स्किप दिस. पर जिन्होंने करा है दे कैन स्टिल डू इट. ठीक है. डिक्शनरी इज डिनोटेड विद अ कर्ली ब्रैकेट. ठीक है. सो कहाँ गया भाई. डिक्शनरी इज डिनोटेड विद अ कर्ली ब्रैकेट. Okay. So in the dictionary, what I want is, आपका sentence क्या है? This program is written in Python. So what I want is, T का basically I want you to get the count of it. ठीक है. कितनी बार repeat हो रहा है, count will come. Then H कितनी बार repeat हो रहा है, that count will come. ठीक है. That is what I wanted. I wanted the frequency of each character in the string. ठीक है. The first question which I said, it was in a wrong way. ठीक है. So that is the reason. Yes, Aditya, maps can also be used, but I'm gonna ask you guys to skip this particular question for now because this is something which is not been covered up. That is the reason I want you guys to skip this up. ठीक है. Where all occurrence of its first character has to be changed. ठीक है. Now let's move ahead. Okay. And let's go to the next set of questions. Okay. There are multiple default functions in Python for strings as well. मतलब string का अपना खुद का default functions are available. Okay. So for example, basic functions like let's say that I have an entire set of string. ठीक है.
उसमें अगर मुझे वैल्यूज को स्प्लिट करना है, आई हैव द पर्टिकुलर फंक्शन टू स्प्लिट द वैल्यूज एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट वेयर डिड दैट गो, इस सेंटेंस को ही, ये जो मल्टी स्ट्रिंग लाइन वाला सेंटेंस है, ठीक है, let's try to split the multi-string line sentence itself. Let's take it ahead and let's take it down. Yes, आदित्य, इसके बाद में, ये प्रॉब्लम के बाद में we'll start with string slicing. ठीक है. Hey, Pawan, your answer is correct. I can see what you have dropped in, and your answer is correct. That is going to append the values in the strings. Okay, let me just move ahead and let me just put up this code here so that later on, once my students are basically checking on things, they will be able to, like, ये फाइल एनीवेज आप सबको मिलेगी ही, तो ताकि आपके पास ये आंसर भी आ जाए. So yeah. I just want to copy paste the part of code which is being put by, हाँ, यहाँ पर मैं sentence कर लेती हूँ because that's why. So this is like the solution which he has given. ठीक है. Yes, Kashish, I've already mentioned that we are going to stick to strings today, and whatever like doubts you have related to strings, or whatever things that you have to, you have anything related to strings, we are going to cover that up. Okay. And I was about to show you about the split function. Okay. So I can move ahead, and when I use the sentence dot split, ठीक है, हमारे पास एक split function होता है which is like a default function in Python. Okay. And this default function, what does it do? It basically it moves ahead and splits on the basis of blank space. Okay. It will move ahead and it will basically like split up all the values using a blank space. When I run this, you'll see that जहां जहां पे मेरे पूरे स्ट्रिंग में ब्लैंक स्पेसेस थे, वहां वहां पे उसने स्प्लिट कर दिया. दैट इज बिकॉज ये जो स्प्लिट फंक्शन है ना, इसका डिफॉल्ट इनपुट होता है. हर फंक्शन का अपना अपना एक डिफॉल्ट इनपुट होता है, एंड इसका डिफॉल्ट इनपुट क्या है? ब्लैंक स्पेस. ठीक है, इसका डिफॉल्ट इनपुट इज ब्लैंक स्पेस. अब इमेजिन करो दैट मुझे ना, मेरा जो सेंटेंस है, मुझे ब्लैंक स्पेसेस के अकॉर्डिंग स्प्लिट नहीं करना. आई डोंट वांट टू स्प्लिट इट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैंक स्पेस. ठीक है, व्हाट आई नीड इज आई वांट टू स्प्लिट इट ऑन द बेसिस ऑफ जो वो स्लैश एन थे, राइट? मेरे सेंटेंस में स्लैश एन था, राइट? व्हेन यू सी, व्हेन आई प्रिंट दिस मल्टी स्ट्रिंग लाइन सेंटेंस को, यहाँ पे बेसिकली ये स्लैश एन है, राइट? आई वांट टू स्प्लिट इट ऑन द बेसिस ऑफ स्लैश एन. ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज स्प्लिट फंक्शन के अंदर मैं अपना इनपुट पास कर सकती हूँ. आई कैन पास माई इनपुट एंड आई कैन आस्क इट टू स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ स्लैश एन. तो ये क्या करेगा? ये बेसिकली जहां जहां पे स्लैश एन है, वहां वहां पे ये स्प्लिट कर देगा. ओके, इट्स गोइंग टू स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ दैट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. Okay, moving to the next part. Let's say that I have basically a entire string. ठीक है, I have a text value. Okay, let's say that मेरा ये text है. Okay. And मुझे इस text में से like I want all the subjects to be like splitted in the form of a list. If you see यहाँ पर जो मेरा output है, ये basically square bracket से denote हो रहा है. If you closely observe, the output is like splitted on the basis of a list. And ये basically square bracket के अंदर है. Okay, so square bracket is denoted by a like we use a like square bracket to denote a list. अब मुझे इसे basically split करना है. Okay, so I want to split it on the basis of comma. Okay, so I can just put a comma inside it, and when I run this, ये क्या करेगा? It will basically split it on the basis of wherever there was a comma, इसे स्प्लिट कर देगा. सो आप हमेशा स्प्लिट फंक्शन, और ऑलवेज रिमेंबर, स्प्लिट करके व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज इट्स गोइंग टू स्प्लिट इट अप एंड इट विल बेसिकली स्प्लिट इट ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमा, सॉरी अ ब्लैंक स्पेस, एंड आप अपना कैरेक्टर्स खुद पास कर सकते हो वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्प्लिट इट इनटू. ठीक है, पोस्ट दिस नाउ let's say that I have a particular statement called as s is equals to hello, welcome to Java session.
ठीक है. नाउ लेट्स से दैट मुझे यहाँ पर जावा को रिप्लेस करना है एंड आई वांट टू मेक इट एज पाइथन. ठीक है, आई डोंट वांट इट टू बी जावा, आई वांट टू चेंज इट एंड मेक इट एज पाइथन. Okay, post that I can, Sudha, I am right here. My apologies. I have shifted, and that is the reason I had to move out of the session because somebody was there to fix my house. Okay, now what I was saying is that I want to change this Java into another like word. We can simply use the replace function in that case. Okay, we can use the replace function. Replace function में आप क्या input pass करोगे? The first input will be कि आपको क्या values को change करना है. ठीक है, so I want to change Java and what I want to change it with नया character आएगा in the second value which is Python. ठीक है, now in my sentence the value is being updated. Okay, likewise अब हमारा जो ऊपर ये function था ना, like we had this right, ये जो splitted list थी, अब imagine करो मुझे इसे basically join करना है वापस. ठीक है, बट इस बार क्या है, मुझे ना ज्वाइन है ना किसी और कैरेक्टर पे करना है. आई डोंट वांट टू ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा. तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर लेट्स से मुझे हैशटैग्स रखने हैं बीच में. आई कैन पुट हैशटैग एंड यूज द डॉट ज्वाइन फंक्शन. Okay, so Anubhav is asking what if Java was not passed in the function, right? Were not present in the function. It was not present in the function. Let's try it up so that it gets clear for everyone. So Anubhav is asking कि अगर यहाँ पर Java नहीं होता, ठीक है, let's say अगर ये Java small letters में भी होता and if I try to run it, okay, it will not be able to, it will not throw any error क्योंकि वो प्रॉब्लम क्या है, वो इसको ढूंढ ही नहीं पाया. ठीक है, सो इट डिड नॉट मूव अहेड एंड रिप्लेस एनीथिंग बट इट जस्ट लाइक गेव द सेम थिंग एज एन आउटपुट. Okay, can we replace multiple words in a single code? Okay, well, you can try to map it with a dictionary, like map function hota hai. ठीक है, you can map it with the map function. Okay, and you like there are higher order functions like filter, map. Okay, that can be used. Okay, let's try that as well. But the first thing what I was showing is I was showing you the joining part of it. Okay, let's say that I want to join it on the basis of like hashtag. So simply मुझे इस s को join करना था. So what I can do is, no, this was not it. It was this text. ठीक है, ये जो splitted list है, मुझे इसे join करना था. ठीक है, but with a new character. ठीक है, so what it did was उसने उसे join कर दिया, but it has put hashtags everywhere. Hey, there is some gudbad which has been done. Wait. Just a moment. Okay, ma'am. If Java is coming twice, let's say that if in this sentence I have Java which is coming twice, what will happen is सिर्फ first value change होगा. Okay, so what it will do is it will only change the first occurrence of it. The next occurrence will not be changed. Okay. Now there are more functions in Python. Okay, every word will be changed. Okay, there are more functions in Python. Okay, can we do like this? No, you cannot do like that. You cannot do like that. What you need to do is you need to run a loop in order to do that. You have to run a loop in order to do that. Okay, it's not possible to do it in a go. Okay, so मतलब what you want to replace it with, how you want to replace it with, that needs to be put in a loop. It's not possible to do it without it. Okay. This is Python, length is 0. Okay, character counting. Yeah, it is. I need to work on it. I want to run and see it if it is correct or not. Okay. Let's say that I have a sentence like this. ठीक है, ये मेरा sentence है.
और अब मुझे इस सेंटेंस में ना मल्टीपल वैल्यूज चेंज करनी है, मतलब स्मॉल एस को कैपिटल एस करना है, स्मॉल आई को कैपिटल आई करना है, ठीक है, मल्टीपल को सिंगल करना है, कैरेक्टर्स को लेटर्स करना है. सो आई कांट डू इट इन अ लाइक गो. इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? आई हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी. ठीक है, मैं एंटायरली एक डिक्शनरी बनाऊंगी. जो जो वैल्यूज I want to replace, I'm going to put it in this dictionary. Okay, let's say that I want to replace um sentence with, I want to replace it with statement. Okay, state. And I want to replace multiple with single, and characters with text. Okay, or maybe letters. Okay, so these are the different things that I want to replace. ये वन गो में रिप्लेस नहीं होगा. What I can do is I have to run a loop. ठीक है, loop will run through this dictionary for I comma j in replacements that I have. Okay, and post that, what I will do is I will basically replace it using the replace function. I comma j. Okay, now when you move ahead and if you check the like print text, or in my case it is sentence, you will be able to see expected to too many values to unpack. Why मैंने अपने क्रिएशन में कुछ दिक्कत करा है. रिप्लेसमेंट डॉट आइटम्स. Okay, so in the dictionary, right, there are like particular functions available in the dictionary. For example, like let's say this is my dictionary, right? Dictionary is nothing but it's a like combination of key and value pair. अगर आपको सिर्फ ये इसे बोलते हैं keys, whatever value is coming before the colon, right, इसको keys बोला जाता है. And whatever value is outside, like after the colon, ठीक है, that is nothing but that is basically called as the value. Okay, now if I only want to see the keys, what I can do is I can use the dot keys function. If I want to basically see the values, then we have the dot values function. And अगर मुझे key और value दोनों देखने हैं, but not in the form of a dictionary, but in a form of a tuple, okay, a list of tuples, basically, I can use the dot items function. Okay, now I am going to take you through, Manish, मैंने यहाँ पर क्या करा है. The question which came in the chat was, people were asking, अगर मुझे replace करने हैं multiple values, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ. ठीक है, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो इस चीज को. आप क्या कर सकते हो, या तो आप मैप फंक्शन के साथ उसे लाइक कोऑर्डिनेट करके यू कैन डू इट. इफ नॉट, व्हाट यू नीड टू डू इज आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी. ठीक है, डिक्शनरी में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपको कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करना है और कौन सी वर्ड के साथ, मतलब किसके साथ रिप्लेस करना है. ठीक है, दैट विल बी क्रिएटेड इन अ डिक्शनरी. फिर आप एक लूप रन करोगे. डॉट आइटम से क्यों, आई विल शो इट टू यू. जब मैं फॉर लूप रन करती हूँ फॉर आई कॉमा जे इन रिप्लेसमेंट डॉट आइटम्स, ये क्या करेगा, डॉट आइटम्स फंक्शन क्या दे रहा है मुझे, डॉट आइटम्स फंक्शन देगा बेसिकली ऐसा वैल्यू, की और वैल्यू का एक बेसिकली टपल देगा. ठीक है, अ लिस्ट ऑफ टपल्स. दैट इज द रीजन मैंने आई कॉमा जे क्या किया है, हर टपल के अंदर आप देखोगे दो वैल्यूज है. तो फर्स्ट आई इसको रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड जे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, मतलब की और वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इन शॉर्ट, सिंपली आई और जे क्या है मेरे डिक्शनरी में, आई इज नथिंग बट द की विच इज बेसिकली द वैल्यू दैट आई वांट टू रिप्लेस, मतलब ओल्ड वैल्यू है, और जिसके साथ मुझे रिप्लेस करना है वो मेरा वैल्यू है. ठीक है, तो दैट इज द रीजन आई एम एक्सेसिंग the I comma j here.
ठीक है, और मैं रिप्लेस फंक्शन के अंदर इनको एक लूप के अंदर पास कर रही हूँ, तो ये एक के बाद एक सब चीजों को रिप्लेस कर देगा. ओके, आई और जे इज नथिंग बट इट्स अ डमी वेरिएबल विच इज देयर. ठीक है, आई और जे डमी वेरिएबल है जो बेसिकली मेरे लूप्स, लाइक it's acting like my it's I comma j is acting like my key and value. ठीक है, now let's move ahead. There are more basic functions in Python to learn about. For example, when we like basic text function क्या हो सकते हैं? अपर केस, लोअर केस में कन्वर्ट करना, टाइटल केस में कन्वर्ट करना, एंड लाइक अगर आपका वैल्यू टाइटल में केस में है या नहीं है वो चेक करना. सो ये सारे फंक्शंस हमारे पास बेसिकली अवेलेबल है. लेट्स से दैट मेरे पास एक सिंपल सा स्टेटमेंट है. ठीक है, लेट्स कॉल इट एज एस इज इक्वल्स टू. Now, I want to basically convert this into uppercase. So we can use the upper function, which will eventually convert everything into uppercase. Uppercase is nothing but capitals. Okay. Likewise, if I want to convert it into lowercase, so we have the function lower. Okay. We also have the function called as title. Okay. So these are the different functions which can be used in order to like change the case. Okay. Uppercase, lowercase, title case. Okay. We also have something called as capitalize. Capitalize क्या करेगा? Capitalize will make each letter, like the first letter, as capitalized. Yeah. So these are the different functions that we have. It's going to capitalize the first letter of the character of the string to the uppercase. Okay. Now let's say that मुझे find out करना है अगर मेरा एक particular sentence अगर वो basically upper case में है या title case में है. ठीक है, whatever case it is in, we can find it out. How we can find it out? आप basically check कर सकते हो using a function called as is upper. ठीक है, अगर वो upper case में है तो वो true बोलेगा. We can also use the is title function to find out if it is in title case. Okay, these are the, yes, we also have is lower function to find out if it is in the lower case. Okay, s dot is lower. Okay, everything is going for false. Else है कौन से case में basically? This is weird, right? S already title case में है. ओके कशिश, ये बेसिकली केस क्या होता है? केस मतलब आपके वर्ड्स जो है दैट इज व्हाट. आई हैव यू पुट इट इन कैपिटलाइज्ड. या सो मैम कैपिटल्स इसमें है. ओके, इज कैपिटलाइज. मैम ओनली कीप्स फॉरगेटिंग वेयर शी इज. मेरी स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है क्या? Yes, we can also replace. I don't think so. We have a function called as is capitalize. Just a moment. No, we do not have a function called as is capitalized. That's what I was wondering. Okay. Anyways, yes, we can replace an integer as well, but provided वो integer एक string form में हो. ठीक है, provided that function is supposed to be in string form. I don't think so. We have a function called as dot is capitalized, as far as I know. It's not there. हमारे पास title है, low is lower है, is upper है. Okay. Now let's move ahead. Okay. Just a second. Let me take you back.
Yeah, so let's do a little bit of the slicing of a string. Okay, let's do the slicing of a string. Now we all know that in a particular string, this is our string. Okay, assume that this is our string. In the string, each value को एक पोजीशन नंबर दिया होगा स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. ठीक है, सो इफ आई पुट स्क्वायर ब्रैकेट जीरो, ये क्या करेगा, ये मेरी फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करेगा विच इज पी. ठीक है, लाइकवाइज अगर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट वन करूंगी तो ये नेक्स्ट वैल्यू को एक्सेस करेगा. दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग. दिस इज नथिंग बट इंडेक्सिंग. बट यहीं पे लेट्स से दैट इफ आई पुट एस स्क्वायर ब्रैकेट जीरो कोलन फोर में भी, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ इंडेक्स इज गोइंग टू गो अप टिल द थर्ड इंडेक्स, मतलब 0 1 2 3. लास्ट इंडेक्स को इट विल नॉट कंसिडर एंड इट्स गोइंग टू प्रिंट द आउटपुट फॉर अस. ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग. स्लाइसिंग क्या है, वेर इन लाइक आप एक बड़े स्ट्रिंग में से एक छोटे वैल्यू को स्लाइस आउट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ स्लाइसिंग. ओके, नाउ yes, S capitalized is present. किसी वर्ड्स में लेटर की क्या प्लेस वैल्यू होती है, किसी भी वर्ड में हमारे हर वैल्यू को बेसिकली वी आर बीइंग गिवन अ पोजीशन नंबर. एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है. ठीक है, लेट्स सपोज दैट दिस इज बेसिकली माय सेंटेंस. जस्ट अ मोमेंट. हाँ, I have a sentence called as array. Why is it not allowing me to write? So in a string, each value, ठीक है, each value will be given a position number, and position number किससे start होगी? Position number will basically start with which value? Position number is position is going to start with zeros. ठीक है, each value will start with zeros and so on, मतलब it will go on. Okay, so let's say that ये मेरा h है, ये zero होगा, तो ई हो जाएगा वन, फिर ये नेक्स्ट एल हो जाएगा टू, उसके नेक्स्ट का एल हो जाएगा टू, फिर ये जीरो हो जाएगा. इवन ये जो कॉमा है इसको भी लाइक वैल्यू मिलेगी. ठीक है, सॉरी 2 3, then we'll have 4, comma will be basically labeled as 4, then we'll have 5, we'll have 6, we'll have 7. तो ये बेसिकली फर्स्ट वैल्यू से लास्ट तक जा रहा है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग. वी कॉल इट एज पॉजिटिव इंडेक्सिंग. ठीक है, एंड अगर एक कोई नेगेटिव इंडेक्सिंग है तो लास्ट वैल्यू, लेट्स से ये क्वेश्चन मार्क हमारा लास्ट वैल्यू, राइट, इसको हम -1 देंगे, फिर यू होगा -2, तो उल्टे डायरेक्शन में हम लेबल करना स्टार्ट करेंगे. मैम मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो किस प्लेस में है, जैसे पता करेंगे. ओके, आपको फाइंड आउट करना है इफ अ पर्टिकुलर वैल्यू कौन से पोजीशन में है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट. कि मतलब अगर इफ यू वांट टू चेक अ पोजीशन नंबर, इंडेक्स नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, वी हैव द फाइंड फंक्शन. ठीक है, ठीक है, लेट्स ट्राई दैट आल्सो. लेट मी पुट अप अ क्वेश्चन हियर. Okay, let's go to the notebook. Okay, so Sanu is asking a question that how to find a particular position number. How to find the index, or maybe I can put this in the form of a text. Yeah. How to find a particular value of the value in the particular string. ठीक है, in order to do this, अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करना है तो आपके पास एक फंक्शन है कॉल्ड एज फाइंड फंक्शन. फाइंड क्या करता है, उससे पर्टिकुलर फाइंड करेगा. लेट्स सी व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट. लेट्स से दैट मेरे पास एक टेक्स्ट है, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू.
ठीक है, तो आई वांट टू चेक इफ अ पर्टिकुलर वैल्यू इज देयर और नॉट. तो फाइंड फंक्शन क्या करेगा, वो सिर्फ फाइंड करेगा. इट्स ओनली गोइंग टू फाइंड द वैल्यू. ओके, I'll say how. So it's going to return the value like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it's returning the index where it is there. We also have something called as dot index. Oh, sorry, my bad. Okay, we also have something called as the dot index function. Dot index function will also work the same way. Dot index function क्या करेगा? It will basically help us to find out the index position of the substring which is there. ठीक है, so using this particular function we can find out कि कौन से position में वो value lie कर रही है. ठीक है. Now let's say that I want to remove a character. Okay, I want to remove a particular character from my string. So I want you guys to solve this up. Okay, I want you guys to write a particular program to remove the character from a string, like remove a particular character from a string. You can take a user input. Matlab, let's say that I have a small string. You can use this same string, and I want to remove the character comma from here. I want to remove the comma from here. So I want to see how you will be writing this particular program. So I want you guys to write a program to remove the comma from this string. I want to see the program. Okay. Now let's say that. Are you sure? Let's try. Everybody's saying ki s dot remove s. Okay. I'm gonna use it. Do you think that this is working? Pavan has given the correct answer, so it doesn't work. Like we do not have a remove function, like which will basically allow you to be used here. Okay. What you can do is आप replace कर सकते हो इस particular value को with a blank space. मतलब you can simply move ahead and you can replace the value और replace क्या करना है comma को एक blank space से. If you see मैंने एक और एक string value open करी है and I have replaced with the blank space. ठीक है, so that is how we can remove that particular comma. Okay, now I am going to take a pause of 5 minutes and we will get back. We will discuss on, or else let me give you a particular program. Okay, I want you guys to solve a particular program for me. Okay, let me give you the like question for it. Okay, चैट जीपीटी से कॉपी करके किसी ने मुझे दिया, देन किसी की खैर नहीं. ठीक है, I want you guys to solve and create this program for me. Okay, I'm going to put up the question. I'm going to take a break of 10 minutes. ये try करो. Just a moment, just a moment. Cipher key नहीं, एक second. Just a moment. Cipher key वाला नहीं था. It was not the cipher key one. मतलब the problem statement is that if you remember how to, आपने generally देखा होगा जब आप एक password change करने की कोशिश करते हो, and this is basically it's majorly with the iPhone. वो आपको directly खुद recommend करने लगता है. Like it starts recommending you that like I can help you to set a strong password. Have you seen that? Yes, no, maybe. Yes, right. तो मुझे वही लॉजिक यूज करना है. आई वांट टू काइंड ऑफ यूज द सेम लॉजिक. ठीक है, एंड आई वांट यू गाइस टू एक्सप्लोर द स्ट्रिंग मॉड्यूल. ठीक है, लेट्स से दैट आप कितने भी कैरेक्टर्स का रख सकते हो. इट्स योर कॉल. यू कैन कीप योर लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट द वे यू वांट. आई मीन 12 कैरेक्टर्स का भी रख सकते हो पासवर्ड आप. या तो आप यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हो टू सिलेक्ट हाउ मेनी पासवर्ड्स यू वांट. ठीक है, यू कैन ऑल्सो गिव द यूजर दिस फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको कॉम्प्लेक्स करना है तो. ठीक है, लेट मी पुट अप इट. एंड
I'm gonna highlight here. मैं जाने से पहले to the break, I'm going to give you that string module में आपके पास क्या क्या functions available है. This is like the problem statement that I want you guys to solve. ठीक है. और है ना string module के अंदर, ठीक है, string module के अंदर string itself is a module और string module के अंदर हमारे पास multiple functions available है. ठीक है. Once I move ahead and I start with importing string, ठीक है, string के अंदर I have multiple functions. For example, the question is going to be on the screen even when I leave. ठीक है, जब मैं break पे भी जाऊंगी तो I'm going to put up the question right here so that you guys can see it. But before going on a break, I want to showcase that string module के अंदर we have multiple functions. ठीक है. For example, आपको अगर लोअर केस कैरेक्टर्स जनरेट करना है, अगर आपको अपर केस कैरेक्टर्स जनरेट करना है, अगर आपको डिजिट्स जनरेट करने हैं, अगर आपको पंक्चुएशन मार्क जनरेट करने हैं, ये सब अवेलेबल है. ठीक है. ऑल ऑफ दीज like functions are available in the string module. How? I can simply go ahead string dot ASCII underscore letters. ठीक है. ये क्या करेगा? ये बेसिकली क्या कर रहा है, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर्स को ज्वाइन करके देगा. ठीक है. व्हाट इज इंपोर्ट स्ट्रिंग? संकेत, स्ट्रिंग एक पूरी एक मॉड्यूल है. वी हैव अ मॉड्यूल. लेट मी शोकेस इट टू यू. इस मॉड्यूल में कुछ सेट ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है. ठीक है. आई एम नॉट श्योर इफ इट इज देयर हियर. हाँ, स्ट्रिंग एक एंटायर मॉड्यूल है जिसमें कुछ सेट ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है जिससे लोअर केस कैरेक्टर्स को जनरेट करना है, मतलब लोअर केस अल्फाबेट्स. इफ आई जस्ट डू after importing it string dot ASCII underscore lower lowercase, it's going to give me all the lowercase values. वैसे ही आपके पास अपर केस है, डिजिट्स है, हेक्सा डिजिट्स है, ऑक्टा डिजिट्स है. वी हैव आल्सो हैव पंक्चुएशन मार्क. मैंने आपको ये मॉड्यूल इसलिए बताया है बिकॉज व्हाट आई वांट इज, मैं चाहती हूँ आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे लिए सॉल्व करो, जहाँ पे जैसे आईफोन में रैंडम पासवर्ड्स जनरेट होता है, राइट? लाइकवाइज आई वांट यू गाइस टू जनरेट रैंडम पासवर्ड फॉर मी. ठीक है. कोड की कॉम्प्लेक्सिटी वो आप डिसाइड कर सकते हो. यू कैन डिसाइड द कॉम्प्लेक्सिटी योरसेल्फ, बट आई एम गोना गिव यू लाइक वैल्यू को जस्टिफाई करता है स्ट्रिंग मॉड्यूल. ओके. आई एम गोना गिव यू लाइक 10 minutes to think about the logic at least. अगर आप लॉजिक भी बिल्ड करके मुझे लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दोगे देन वी आर गोइंग टू बिल्ड इट टुगेदर. ठीक है. कोड को कॉम्प्लेक्स बनाना है, कैसे भी बनाना है, वो आप पे डिपेंड करेगा. दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू. ओके. ओके देन आई एम गोना टेक अ पॉज एंड आई विल बी बैक. उसमें रैंडम सिलेक्शन होता है डियर, तो रैंडम आप लग सकते हो. यू कैन कीप इट रैंडम. इंद्रनील, it's your creativity. You can have the liberty to showcase whatever you want to. उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए. ठीक है. यू शुड आल्सो हैव स्पेशल कैरेक्टर इन इट. yes, we will ask for the length of the password. कितना चाहिए? 11 8. I am back. So yeah, talking about, I see some solutions which have come in. Where are other solutions? I see only Pawan is put up his solution. तुम लोगों ने कुछ नहीं सोचा इस चीज के बारे में? So मैंने कोई हार्ड कोडेड रूल नहीं दिया हुआ है. What I need is कि मतलब कैरेक्टर्स सब हो. लाइक यू कैन हैव अ अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए. आई ऑल्सो वांट अ स्पेशल कैरेक्टर टू बी इंक्लूडेड इन इट. आई वांट एवरीथिंग टू बी देयर. ठीक है. दैट इज व्हाट आई वांट इन इट. ओके. आई हैव. Okay, so the solution which you have sent in that solution, let me just put up the solutions which I have received. Just give me 1 second, okay? I have to plug in my charger. मुझे बहुत सारे solutions आए हैं. अभी जो मुझे recent solution आया है that is from Sujani. Sujani, the solution आपने जो मुझे दिया है उसमें आपने क्या करा है, अपने एक पासवर्ड का लेंथ मतलब प्री डिफाइंड पासवर्ड लेंथ सेट करा है. ठीक है. So talking about the solutions which have come into the chat. ओके. सुजानी, आपने एक पासवर्ड का जो लेंथ है आपने प्री डिफाइंड पासवर्ड लेंथ सेट कर दिया है. ठीक है. बट वेर एज आई लाइक तन्मॉयज वन, लाइक इट्स इजी ऑल्सो. ठीक है. लेट मी शो इट टू यू. हाउ कैन आई कॉपी दिस पार्ट?
ठीक है. So this solution which I'm going to put up here is basically coming from Tanmay. Okay. Paste. ठीक है. So what he has done is सबसे पहले दोनों को इंपोर्ट कर लिया, स्ट्रिंग मॉड्यूल और रैंडम मॉड्यूल को. फिर लेटर्स जनरेट करे. लेटर्स क्या करेगा? कॉम्बिनेशन, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर स्ट्रिंग्स, लाइक स्ट्रिंग्स एंड you can see that upper case and lower case दोनों का एक कॉम्बिनेशन, लाइक जॉइंट स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा. उसके बाद उन्होंने डिजिट्स भी ऐड करे, बिकॉज मुझे एक नंबर भी चाहिए था मेरे उसके अकॉर्डिंग, और एक पंक्चुएशन मार्क चाहिए था. ठीक है. फिर उसने लेंथ ऑफ पासवर्ड अब मांगा है, और रैंडम डॉट चॉइसेस यूज करके ही हैव गिवन द लेंथ, मुझे कितने लेंथ का चाहिए, एंड ही हैज बेसिकली कैलकुलेट गॉट अ पर्टिकुलर रिजल्ट. ठीक है. पोस्ट दैट ही इज रनिंग अ लूप through the result that we have got, and let's just see how it goes. Like, let's say if I put 12. Okay, so this is how it's including the special character as well and the other values as well. Okay, now let's see what came in this res. If you see, ये जो res, यहाँ पर ये जो res आया है, ये क्या आया है? It has come up in the form of a list. ठीक है. आप इस लिस्ट को सिंपली, rather than running a loop, आप इसको सिंपली डॉट जॉइन से भी ज्वाइन कर सकते थे. ठीक है. यू कुड हैव आल्सो जॉइंड इट यूजिंग द डॉट जॉइन. oh it's डॉट जॉइन फंक्शन. ठीक है. I see Anubhav have put in a very complex one. ठीक है. It's quite complex, but what I'm going to do is I'm going to move ahead and let's solve this one one by one. ठीक है. Let's say that सबसे पहले आप इसको, somebody to ask me about regular expression as well. ठीक है. हम regular expression से भी try करेंगे. We will try it using the regular expression as well, so that रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर किस लिए यूज हो सकता है? रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू वैलिडेट. ठीक है. आपके पासवर्ड के वैलिडेशन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड हियर. नाउ हाउ? लेट्स सॉल्व इट वन बाय वन. पहले हम पासवर्ड जनरेटर करते हैं एंड उसके बाद में हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करेंगे. पहले एक बेसिक प्रॉब्लम के लिए यूज करेंगे, मतलब ईमेल आईडी को वैलिडेट करने के लिए पहले हम यूज करेंगे, फिर हम अपने पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए यूज करेंगे. ओके. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग इट. ठीक है. सो हमारा दो मॉड्यूल्स ऑलरेडी इंपोर्टेड है, विच इज स्ट्रिंग एंड द अदर वन. What I'm going to do is I'm going to basically create an entire string. ठीक है. जिसमें बेसिकली मेरे सारे कैरेक्टर्स आएंगे. सारे कैरेक्टर्स एज इन लोअर केस, अपर केस, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर, एवरीथिंग विल बी देयर. ठीक है. रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन यूज करके आई एम गोना यूज द सेम थिंग, बट मैं इसको एक लाइन ऑफ कोड में भी कर सकती हूँ. हाउ? लेट्स डू इट. ठीक है. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई हैव एन एंटायर character, or we can call it as character, जिसमें what I'm going to do is, yes Ankit, we'll talk about the regular expressions. ठीक है. string dot, आपके regular expressions are not covered up or you have not listened to it, right? ASCII letters क्या कर रहा है? ASCII letter will generate the different upper and lower case characters which will be like in a form of a string concatenated together. अरे मैंने शायद इसे टेक्स्ट में डाल दिया है. वो विल ज्वाइन इस पे. अब मेरे पास इसका पूरा वैल्यू आ गया. अब मैं एक और एक चीज ज्वाइन करती हूँ, स्ट्रिंग डॉट ASCII अंडरस्कोर डिजिट्स. डिजिट्स क्या करेगा? 0 से लेके 9 तक ये बेसिकली डिजिट्स जनरेट करेगा. इट विल जनरेट द डिजिट्स बिटवीन 0 to 9 डिजिट. ओ माय बैड, ASCII नहीं आएगा. इट विल जनरेट द डिजिट्स. ठीक है. अब डिजिट्स के साथ में मुझे एक स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए. सो लेट्स डू स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन.
String dot punctuation will basically generate the punctuation marks. जो भी आपके पास punctuations होते हैं, that is what it will do. So what I've done is we will combine these together. Sangamesh, these are like building blocks. When you move towards analytics, these are like building blocks for it. Okay, I'm going to combine all of this, and uske baad mein I have an entire big string which is full of different characters. Okay, which is full of different characters. Now, Sangamesh, it also helps you to build logics in a way that how to move around with the code, because in a way, in data analytics, in data science also, you will be coding around, and code करने के लिए you need logics. ठीक है, post this in order to generate the password. ठीक है, what I'm going to do is एक function आता है जिसका नाम है random choice. Okay, अब मैं random choice function अगर use करूंगी, what will happen here is random dot choice. If I use the random choice function and I give char to it, which is like ये पूरा entire string. ठीक है, अगर मैं ये पूरा entire string pass करूं और उसको मैं बोलूं to select 8 values format. I've given two position arguments. Is it? It says define if I'm not wrong. Something I'm doing is wrong. No, it is choice only, na? It is choice. See, oh, you're right. Okay. So what random dot choices function will do, it will basically randomly choose values from the entire string which has been passed as an input. Okay. If I give 10, it's going to choose 10 random values randomly. Like it's gonna pick up random values. ठीक है, इसमें मैंने शायद से digits को concat नहीं किया है. We have concatenated digits as well. Okay. Likewise, lastly, what has been done is we have joined it together. Join मतलब like लास्ट में यहाँ पर क्या करा है, इन्होंने डिफरेंटली करा है. what like Tanmay did was different. He basically created an empty string को उन्होंने एक loop, like what he did is he passed a loop which is going to this result में like एक एक random choices को use करके जो length हम देंगे उसके according values आ जाएंगे. Suppose that he has like stored the output in the empty string, but मैंने क्या करा, मैंने simply dot join कर लिया. Okay, ये पूरे चीज को, ठीक है, रैंडम डॉट चॉइसेस अब मैं यही यूज करने वाली हूँ. I'm going to use this one. Okay, let's store this in, let's say मुझे 12 characters का चाहिए. Yes, Anjali, just give me a moment there. I'm going to store the output here. ठीक है, उसके बाद में what I'm going to do is I'm going to simply move ahead and use the join function to join my result up. And let's see, print the res and okay. So res is nothing but it's like in a form of a list, and then final result is in the form of a password, like a single string. Okay. Yes, Anjali, I'm checking on your output. आपने random dot randint करके use करा, select करा हुआ है, which also makes sense to me. I can put it up here. Wait. So एक particular answer को achieve करने के multiple ways है. There are multiple ways how you can reach to a particular answer, and there's no hard coded rule that something is basically like up to the mark, or maybe like that is the only way you can do it. Okay, there are multiple ways you can achieve it. What happened, Manish, to you today? What do you want
Like, what exactly do you want to understand? I'm not able to do understand your point. I have enough students in the session who are able to cope up with it. Okay, so this code is being solved by Anjali, and what she has done is, again, she has concatenated all the values together. Post that, she has taken an input from the user so that he gives the input related to the length, like password ka length kitna chahiye. Post that, she has created an empty string which is finally going to store the value. Okay, and then finally a loop has been run which is going through the number of length which is being passed as an input by the user ki kitne length ka password chahiye. And using random.random function, she is basically getting, okay, she's basically getting a position number. Random.random function kya karta hai, that basically generates a random integer. Matlab, if I give random.random, I give an input as 0,6 to it will randomly pick up one value, okay, one index. So random.random function is being given an input which will go up till the length of the string. The string, which string? This string, जो basically उन्होंने concatenate करके बनाया. And index select करके she's basically storing the output in the empty password. Okay. In this, never position 0 will come. Yes, Pavan, you are so right. Pavan states that इसमें 0 position number कभी नहीं आएगा. So what you can do is you can change it, right? You can make it as 0. Okay, that's it. 12. Okay. But what I want you guys to do here is I want you guys to basically go ahead and see the passwords जो generate हो रहे हैं. What if I want to validate these passwords ahead? Okay, I want to check कि मतलब criteria meet हो रहा है या नहीं हो रहा है. Let's say I have a criteria that at least one uppercase letter, at least one lowercase letter, and at least one digit, and at least one special character. Let's assume that this is basically the criteria. ठीक है, मेरा जो पासवर्ड है, अब मेरा पासवर्ड जनरेटर क्रिएट तो हो गया, बट पासवर्ड वैलिड पासवर्ड है या नहीं है, फॉर दैट आई हैव सेट अ क्राइटेरिया. दिस इज माय क्राइटेरिया. Okay, that at least one uppercase value, at least one digit, and at least one special character. Okay, Manish, your problem I will be solving up. Do not worry. I guess that you are not able to understand, but there are students who are able to cope up with it. We will have a doubt solving session, or else tell me dear कि कहाँ से वापस start करें. Okay, we have half an hour to go. I can help you out धीरे धीरे. Okay. Meanwhile, others, can you try to get the validator here? How to get the validation? And I'm going to give you a hint here. Use a regular expression. Manish, you are facing problems. I understand. Tell me now. I am giving you like that particular opportunity to tell me like कहाँ से क्या problem है. Tell me. Then we can take random values from different sources like string overview. You need the entire overview of it again. ठीक है. No problem. Okay. Coming back, अब strings we have already discussed about that strings are denoted with single quotes and double quotes. Okay, string क्या होता है? String is nothing but like it's a text value, and that text will also include like any special character, any number, any decimal number, any kind of boolean value also. अगर आप quotation mark के अंदर, अगर आप एक single quotation mark या double quotation mark, okay, if you put any value inside it, that is going to be, it can be single or it can be double. Okay, if you put any value inside this, it can be, it is basically denoted as a string value. ठीक है, अब ये सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर आप इंटीजर भी अगर पुट करोगे, ठीक है, लेट्स से दैट आई हैव अ वेरिएबल a इज इक्वल्स टू 25. अगर आप इस 25 का जो वेरिएबल a है इसका आप टाइप चेक करोगे तो इट इज गोइंग टू कंसिडर इट एज बेसिकली एन इंटीजर. ठीक है, it is going to consider it as an sorry, it will consider this integer value as a string. String is a plain text. ठीक है, with any kind of special character. अगर मैं इसमें @ डालूं, चाहे मैं कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डालूं, पर वो डबल कोट्स के अंदर है, तो उसे हम स्ट्रिंग्स बोलेंगे.
ठीक है. स्ट्रिंग इज नथिंग लाइक, अगर आपने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्राई करिए तो उसमें हम कैरेक्टर्स होते हैं, कार्स, CHARS. तो स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर. ठीक है, इज नथिंग बट द कैरेक्टर. ओके. नाउ इन स्ट्रिंग there is something called as like it's an iterable object that आप एक string के थ्रू आप loop run कर सकते हो. ठीक है, loop as in a for loop can be run. For loop किस लिए यूज होता है? For loop is used to iterate through a sequence of items. ठीक है, you can simply run, let's say that मेरे पास एक sentence है. Okay. ठीक है, I can run a loop through it simply because it's an iterable object. ये क्या करेगा, हर एक loop में एक एक वैल्यू को इन दिस स्ट्रिंग इट विल एक्सेस. ओके. नाउ this particular string or any string has something called as a position number, which is also called as an index. Okay, and the index values will start with 0. Always remember a square bracket 0. Okay, if I put a square bracket 0, it's going to print the first value, which is w, because पॉजिटिव इंडेक्सिंग में जो हमारे वैल्यूज है उसको हम जीरो से डिनोट करना स्टार्ट करते हैं. ओके. एंड इफ इट इज अ नेगेटिव इंडेक्सिंग तो हम उल्टी डायरेक्शन से लेबल करना स्टार्ट करेंगे. ओके. सो लाइक पॉजिटिव इंडेक्सिंग में वन बाय वन थिंग्स विल बी लेबल लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन. एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग में लास्ट वैल्यू विल बी लेबल्ड फर्स्ट. मतलब लास्ट वैल्यू जो है e is will be labeled as -1 if I am going by negative indexing. Only if I am going by negative indexing. ठीक है. एंड मतलब हाउ इट विल बी लेबल्ड -1 -2 -3, मतलब उल्टी डायरेक्शन से यू विल स्टार्ट लेबलिंग. दिस इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड एज इंडेक्सिंग. ओके. देन post that we have something called as string slicing. दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट. आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सिर्फ स्ट्रिंग में नहीं होता है. इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जैसे आपका लिस्ट हो गया, टपल हो गया, यू विल बी स्टडिंग अबाउट इट इन दी गोइंग फॉरवर्ड सेशन. उन सभी में है. ठीक है. स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग इज नथिंग बट इट्स लाइक एक्सट्रैक्टिंग अ स्मॉल पीस फ्रॉम द एंटायर बिग like sentence. ठीक है. Let's say that I have a sentence called as hello. ठीक है. And I want to extract, let's say that I want to extract the values starting from the 0 position. Okay. And I want to extract till the 5th index. I can just put 0:5. 0 is for the starting index and 5th is for the ending one. Okay. तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 4 तक वैल्यूज को 4th इंडेक्स तक इट विल प्रिंट एज एन आउटपुट. सो व्हाट हैपेंड इज ये मेरा बड़ा स्ट्रिंग था and from that big string a small piece of string is being extracted. Okay. Manish, are you with me? I want to know it from you because you are the only person who is coming up with problems. So that is the reason this question is for you. ठीक है. Likewise, ठीक है. Yes, I believe you do. ठीक है. Likewise, this is like the slicing part of it. ठीक है. Slicing आप याद रखना, everybody remember this, slicing and indexing are very important because it's going to be there in others as well. इसके बाद में मनीष भी also did the case functions. What is case? जैसे हम Excel या Word format में अगर आप देखते हैं, ठीक है, you will be able to see that we have capital letter, we have lower letter, lower case letter, title case letter होते हैं. हम हमारे पास Word में भी होता है, right? लाइकवाइज हम पाइथन में भी कर सकते हैं. अगर आपको पूरे वैल्यूज को, इन सारे वैल्यूज को, लेट्स से हेलो वर्ल्ड को अपर केस में करना है, तो वी हैव द फंक्शन कॉल्ड एज अपर. ये केस चेंज कर देगा. ठीक है. उसको कैपिटलाइज कर देगा, सब वैल्यूज को कैपिटलाइज कर देगा. ठीक है. लाइकवाइज यस प्रियांक प्लीज. अब मैं क्या करूं प्रियांक बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. यू हैव गिवन द टास्क व्हिच कैन नॉट बी डन विदाउट regex. I understand, Priyank, but please, you also understand my part. I am only one. I'm not divided into two, three. So others are also facing problem. So regex is not our ideology. मैंने वो थोड़ा advanced form दे दिया because I have many students in the session जो थोड़े advanced part पे है. तो प्रियांक, अगर आपका मतलब basics is clear because कुछ students को basics में problem हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हो. Do some kind of research on regex dear. Meanwhile, ठीक है?
I am reading your messages, but I'm also trying to cope up with others. Okay. Likewise, we have lower space. Okay, I have not mentioned about one particular function. It is basically called as a strip function. strp strip. Okay. There is a function which is called as a strip function, which is basically used to remove any kind of white spaces. White spaces are nothing but blank spaces. Okay. Now, let's say that in my strip function, I mean, in this particular sentence, let me just modify the sentence a little. Okay. I have blank spaces at the starting and I have some blank spaces at the beginning as well. Okay. If I just move ahead and if I use a dot strip, what it will do is it will strip off the blank spaces. Okay. By default, strip function will strip the blank spaces. Now let's say that I have a blank space and I have a hashtag also. Okay. If I give it basically an input as space hashtag, if you see the strip function, when I pass the input, it's going to strip out the particular value that I wanted to remove. Okay, from the starting of your sentence and from the ending of your sentence. Suppose that हमने एक और एक फंक्शन एक्सप्लोर किया था जिसका नाम था रिप्लेस फंक्शन. लेट्स से दैट अगर आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस करना है, ठीक है, लेट्स से मुझे ये वर्ड को यूनिवर्स से रिप्लेस करना है, सो आई कैन सिंपली मूव अहेड एंड आई कैन रिप्लेस इट यूजिंग द रिप्लेस फंक्शन. ठीक है, व्हाट दिस विल डू, ये बेसिकली वैल्यू को रिप्लेस कर देगा. ठीक है, हमने स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में, सॉरी, स्प्लिट फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करा था. लेट्स से आपको अगर पर्टिकुलर वैल्यू को स्प्लिट करना है, लाइक मुझे इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. जब मैं a डॉट स्प्लिट करूंगी तो व्हाट इट विल डू इज इट विल स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैंक स्पेस. इफ यू सी, जहां पे भी ब्लैंक स्पेस था उसने स्प्लिट कर दिया और वो अलग अलग एक लिस्ट फॉर्म में क्रिएट हो गया. लिस्ट किससे डिनोट करते हैं? पाइथन में एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम लिस्ट है, जो हम कल करेंगे. ठीक है, वो स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होती है. तो इफ यू सी, हेलो के साथ वो कॉमा भी आ गया. लेट्स से दैट मुझे ना ब्लैंक स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट नहीं करना, बट मुझे ना उस कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट करना है. जहां पे भी मेरे स्ट्रिंग में कॉमा है उसके बेसिस में मुझे एक स्प्लिट चाहिए. तो आई कैन जस्ट पास द कॉमा inside it. If you see from this split, that comma is gone. Okay, because the split eventually it happened on the basis of the comma itself. Okay, we also spoke about join function. ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास split होके एक list आ गई, right? Let's say I'm going to store it in a new variable, call it as b. Okay, I have this list जिसमें कॉमा हट गया और हेलो और वर्ल्ड है. अब मुझे इसे ज्वाइन करना है एक स्ट्रिंग के फॉर्म में. आई कैन सिंपली ओपन अ ब्लैंक स्पेस, मतलब ओपन अ स्ट्रिंग, यूज द डॉट ज्वाइन फंक्शन. ये ब्लैंक, ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है ये मेरा ज्वाइनिंग कैरेक्टर है. Yes, Sudarshan, we also have R strip and we also have L strip. R strip is for right hand strip and L strip is for left hand strip. मतलब अगर आपको सिर्फ राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू को ड्रॉप ऑफ करना है तो आप आर स्ट्रिप फंक्शन यूज करोगे, एंड अगर आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से करना है तो आप बेसिकली एल स्ट्रिप यूज करोगे. ठीक है, सो आई कैन जॉइन इट. नाउ द कॉमा विल बी गॉन फ्रॉम माय स्ट्रिंग. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड हमने एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करा, एंड इनफैक्ट मैंने एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में पहले कई बार डिस्कस करा है. ठीक है, सो आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्सप्लोर एस्केप कैरेक्टर्स ऑन योर ओन. Okay, now all the basic functions which are available in string, I'm going to drop a particular W3 schools page here. You can explore these particular methods. They are basically coming from a particular string value and you guys can like get to know about it.
फिर पता है मनीष, मैं थोड़े एडवांस्ड फॉर्म में चली गई। आई थिंक तुम्हारा स्ट्रिंग पार्ट कवर्ड बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हुई हूँ बिकॉज ऑफ माई अदर स्टूडेंट्स हु आर लाइक प्रोएक्टिव, एंड आई थिंक उनका वो पार्ट कवर हुआ होगा, दैट इज द रीजन, लाइक दे आर अ लिटिल प्रोएक्टिव देयर. Okay, so I have sent in the W3 schools wala note to you in the chat. Okay, I hope it has been sent to all of you. Okay, there are more functions to. Okay, do not worry, nahi hua hai ma'am. Okay, I get it. ठीक है, but I'm not going to do the regex part because understand the student. हम क्या करेंगे ना, Sunday को doubt solving है. I'm gonna keep the regex validation part for that day because students are getting very hyper for that, and just understand, like my students are beginners as well, so I get you guys have gone through it, but please understand that. Please provide source code. Sure, I will. Okay, now just give me one moment. Let me put up a question here. फिर पोज दैट मैंने आपके साथ डिस्कस करा अबाउट द स्ट्रिंग्स मॉड्यूल. ठीक है, स्ट्रिंग्स अपने आप में एक पूरा लाइब्रेरी है जिसमें स्ट्रिंग्स से रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल है. ठीक है, एज इन like let's say that I want to basically generate a string of all the characters, मतलब ए बी सी डी ऐसा मुझे चाहिए, तो मैं स्ट्रिंग्स लाइब्रेरी से सिंपली वो क्रिएट कर सकती हूँ, विच वॉज डिस्कस्ड हियर. हमारे पास हमें सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग्स लाइब्रेरी को, बिकॉज इट्स एन एंटायर लाइब्रेरी. तो उस लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज करने के लिए यू नीड टू इंपोर्ट द लाइब्रेरी. ठीक है, उसके बाद इस लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस है. फॉर एग्जांपल वी हैव ASCII अंडरस्कोर. अगर आपको लोअर केस में लेटर्स जनरेट करने हैं तो आपके पास लोअर केस फंक्शन है. इफ यू सी ABCDEFG, इट्स गोइंग टू जनरेट ऑल द लोअर केस लेटर्स. इसको बेसिकली आप स्प्लिट करके एक लिस्ट में भी क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, इट एंटायरली works, and you can split it up into a new particular list kind of structure. ठीक है, just give me a second. In the previous sessions we discussed how we can reverse a particular string. Do you remember कैसे reverse कर सकते हैं हम string को? The most basic one is we can simply go ahead. Let's say that मेरा एक string है and let my string be this only. A square bracket colon colon -1. So using the indexing, we can simply yes colon colon -1. So it will start printing from the reverse order. So there are multiple ways how basically a string can be reversed. Okay, there is another way how it can be done. Let's say that I can start with creating an empty string. This is like another method how you can reverse the string. Yes dear, ये वाला मेथड मैंने बहुत बार पहले भी एक्सप्लेन करा हुआ है. यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास स्ट्रिंग में एक इंडेक्सिंग है. ठीक है, वी ऑल हैव इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग. सो बाय डिफॉल्ट द index is being set like this. मतलब it is going to print it in like forward order. जब आप -1 करते हो यहाँ पे, तो what happens is it starts accessing the value from the end value and accordingly it prints starting from the -1. We have spoken about this earlier as well. Okay. Now another way to reverse it, let's say that I'm going to create an empty string which will store my reverse order of it. Okay, this is my empty string. I will run a loop which will go through A for I in A. मतलब it's going to access each value in my like string which is A. And यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर I'm going to basically move ahead, and what I need to do is I'm going to basically जो मेरा reverse वाला string है उसमें मैं sum up करूंगी. I'm going to add it up there. No section, there's no such book. आप बस logic building करो. The most important thing in here is basically logic building. Okay, this is another way how it can be reversed. यहाँ पे मैंने क्या करा, for I in
A, मतलब whatever the value is, I've summed it up, मतलब reverse में जो value थी, मतलब empty string, I have added up I to I and then stored it in the same variable. ये loop में होगा और ये reverse order में values को update कर देगा. There are 5 to 6 different ways how you can reverse a particular string. Okay, I want you guys to come up with the different ways, like you can try it yourself as well, like multiple ways you can try exploring it. And yeah, Manish, how are you coping up with it? बहुत सारा हो गया क्या? बहुत ज्यादा हो गया? Are you थोड़ा सा okay? Okay, what will be tomorrow's topic? No मैम, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत अभी क्लियर हुआ या अभी भी थोड़े परेशान हो और सैड हो तुम आज? Tomorrow's topic will be list. I'm pretty much sure you do, dear. But how are you coping up with it? Like this one, like is it better now, or you are still upset today? You messaged something, and I was not happy to see that. नहीं आदित्य, आई एम गोइंग टू बेसिकली कंटिन्यू बिकॉज मैं चाहती थी थोड़ा रेजेक्स वाला पार्ट लेना, बट स्टूडेंट्स आर नॉट ओके विद इट, सो वी आर बेसिकली गोइंग टू like put it on hold and I'm gonna take it up in the subsequent sessions. Okay. String is a vast module and it cannot be completed in one session. I don't think so. String can be completed in one session because string ke around when you actually work and you do certain things, right? That is when you will get to know more on the string part. Okay. Uh, मैं एज अ होमवर्क आई वुड वांट टू गिव यू वन क्वेश्चन. पता नहीं तुम लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट ट्राई इट. ठीक है. साइफर की पहले जो मैं दे रही थी, आई एम गोना ट्राई दैट, गिव दैट अगेन. So this is basically what I want you guys to do. I want you guys to create an encryptor in Python, and these are basically लॉजिक बिल्डिंग के लिए ये चीजें कर रहे हैं हम. ठीक है. somebody is asking like ये सब एनालिसिस में हेल्प करेगा. It will not help you guys in analysis, but it will help you guys to break down a particular problem and then like uh, move across it. I did Python earlier, but also but regex is something which is confusing. Please take that up in doubt solving. For sure, for sure. Regex is not confusing. Regex में आपको रटना पड़ता है and आपको रटने की जरूरत नहीं है. इसीलिए रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली कभी भी इंटरव्यूज में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि लाइक सक्षम, इफ यू गो बैक टू रेगुलर एक्सप्रेशन, आपको याद है दैट रेगुलर एक्सप्रेशंस में वो बेसिकली पार्ट आता है लाइक लाइक मतलब लेट्स से दैट मुझे एक कैपिटल लेटर्स है या नहीं है वो चेक करना है. तो उसका जो हमें वो वैल्यूज, व्हाट डू वी कॉल दैट, देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म टू इट, जो हम आर कैरेक्टर्स देते हैं. okay? जो रॉ स्ट्रिंग्स बेसिकली हम पास कर रहे होते हैं, वो हमें मेटा कैरेक्टर्स बेसिकली वो याद करना बेसिकली थोड़ा डिफिकल्ट है. ठीक है. सो दैट इज द रीजन. Yes, your code is okay. Your code is totally fine there. Okay, that is the reason regex is not asked. And people who have been asking me again and again that what is regular expression? Regular expression is nothing but कुछ predefined patterns है Python में. मतलब लेट्स से दैट अगर ये मेजरली ना वैलिडेशन के पर्पज में यूज होता है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इट इज बेसिकली यूज इन द टर्म्स ऑफ वैलिडेशन. वैलिडेशन कैसे? जैसे समझो दैट मैं इनपुट ले रही हूँ ईमेल आईडी का. अब मुझे उस ईमेल आईडी को वैलिडेट करना है. ओके. अब ईमेल आईडी कैसे वैलिडेट होगी? लास्ट में .com.in.org ऐसा आना चाहिए. ओके. एंड जो स्टार्टिंग में है वो बेसिकली स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए या कैपिटल लेटर भी हो सकता है, और एक न्यूमेरिकल हो सकता है वैल्यू. ठीक है. और एक एट द रेट साइन तो डेफिनेटली होना ही होना चाहिए. ठीक है. सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है? रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है? इट ट्राइज टू बेसिकली मैच. हम रेगुलर एक्सप्रेशन में एक प्री डिफाइंड पर्टिकुलर पैटर्न असाइन कर देते हैं, and regular expression tries to match
कि जो हम इनपुट पास कर रहे हैं उसको एक, लेट्स से दैट अगर मैंने कोई इनपुट पास किया, इट विल ट्राई टू सर्च एंड इट विल ट्राई टू फाइंड आउट अगर वो पार्ट उस पैटर्न से जो हमने एक सब लाइक पैटर्न डिफाइन किया है क्या उससे वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो दैट इज द मेजर पर्पस व्हाई रेगुलर एक्सप्रेशंस आर बीइंग यूज्ड. ठीक है. वी विल ट्राई टू टेक अप. सबसे बेसिक एग्जांपल इज ईमेल वैलिडेटर. ये सबसे बेसिक एग्जांपल. How to manage college study plus coding. Coding is fun, Manish. What course are you pursuing right now in your college? Can be less like 1 hour. Well, Aditya, how can I make the lectures less than 1 hour? इतने सारे doubts आते हैं आपको idea भी नहीं है. मैं that is the biggest reason why we don't keep the chat open for others. मतलब कई बार मैं ऐसे क्लास ले रही होती हूँ, मैं कुछ और टॉपिक ले रही हूँ और लोग पीछे से कुछ और मैसेज करे, तो माय ब्रेन गेट्स कंफ्यूज दैट मैं कहाँ जाऊँ. बीटेक आईटी ब्रांच, तो तुम्हारे पाइथन नहीं है? आई थिंक डेटा साइंस इज समथिंग विच इज बीन इंक्लूडेड एज अ सब्जेक्ट इन आईटी एंड सीएस. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ओके. मेरे छोटे भाई के लिए तो था. मे बी. यू आर इन विच ईयर राइट नाउ? इन थर्ड ईयर इट इज इंक्लूडेड. ओके. ठीक है. मीन वाइल जो जो रेगुलर एक्सप्रेशन कर रहे हैं. यस कुंतल, यू कैन क्रिएट मैप्स विद पाइथन. मतलब जो आप गूगल मैप, वर्ल्ड मैप, उसकी बात कर रहे हो, राइट? यस, नो, मे बी. हाँ, वी कैन क्रिएट मैप्स विद पाइथन. मेरा फेवरेट लाइब्रेरी है मैथ्स, सॉरी, टू क्रिएट द मैथ in Python, which gives you a very good visualization as well. But Kuntal, why do you want to discuss that as of now? मेरे बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज वो विजुअलाइजेशन है, entirely different है. इनफैक्ट आपको मैप्स विजुअलाइजेशन करना बता, दैट इज नॉट इवन इंक्लूडेड इन योर करिकुलम. बट मैं आपको विजुअलाइजेशन जब हम कवर करेंगे, आई विल लाइक लेट यू नो दैट टाइम ओनली. आई डोंट नो, सी, अभी मैंने क्या बोला कि स्टूडेंट्स कहीं से भी कुछ भी उठाकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं. एंड मैं क्लास लेते वक्त कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं किसको जवाब दूँ, क्या जवाब दूँ मैं इस चीज का. ठीक है. यू कैन ट्राई टू एक्सप्लोर लाइक द लाइब्रेरी. लेट मी recall the library name. The one which I use is basically which question. We will get on that particular thing. Just give me 1 second. I'm forgetting the one which I use, and that is making me curious. GeoPandas hai. Is data science enough for placement? We have GeoPandas, we have Chloropyth, ठीक है. But there is one which I like and मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा. So I'm gonna get back on to you because the creating maps with that one is quite easy. ठीक है. Let me recall. कुछ functions थे मुझे याद उसमें, which was basically एक तो जियो पांडास है विच यू कैन यूज, मतलब यू कैन प्लॉट इट यूजिंग प्लैटिन लाइक प्लैटिट्यूड एंड द अदर वन. बट देर इज वन मोर जो मुझे मिल नहीं रहा, या तो वो लाइब्रेरी डिसकंटिन्यू हो गई है या तो वो पता नहीं कहाँ गई. आई हैव टू लुक फॉर इट. ओके. गिव मी अ डे, आई विल गेट बैक टू यू. ओके. मैम, दिस कोर्स इज इनफ फॉर इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट. लिसन माय स्टूडेंट्स, नथिंग इज गोइंग टू बी एवर इनफ फॉर प्लेसमेंट्स. वो आपका खुद का ब्रांडिंग है कि यू हैव टू डू. इट्स नॉट दैट वी विल नॉट बी हेल्पिंग और द कोर्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. बट माय एडवाइस इज, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो स्टार्टर्स है, जो बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं अभी, आपके लिए तो कॉलेज प्लेसमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए. एंड यू हैव टू बी रेडी, लाइक बाय डूइंग सेल्फ ब्रांडिंग. अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बनाना स्टार्ट कर दो. नो, मैटप्लॉटलिब नहीं है यार. दैट्स नॉट मैटप्लॉटलिब. मैटप्लॉटलिब इज यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस. बट द क्वेश्चन केम इन वाज बेसिकली फॉर मैप्स, हाउ टू क्रिएट मैप्स. ठीक है. I will get back to you on this one in the next session. Ma'am, is DSA important for a role of ML engineer or data scientist or data analytics? Data structures algorithm? Yes, of course, it is important. Okay. Uh, why not? It will be important. It is basically important. Interactive maths.
Okay. I am going to see you guys in the next session, and you guys have given me a curiosity to figure out because I am not able to use Folium Library. Yes, I got the library. The library name is called as Folium Library. Okay, you can simply plot using Folium Library like maps जब आपको create करना है. Okay, I am pretty much sure. ठीक है, अगर मैं फोलियम लाइब्रेरी अगर यहाँ पर ऐसे शोकेस करूंगी तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आएंगे मुझे खाने के लिए कि ये क्या सिखा रहे हो, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है ये वो लाना फलाना. सो आई एम स्टिल गोइंग टू टेक दैट रिस्क. ठीक है. एंड टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट फोलियम लाइब्रेरी. फोलियम लाइब्रेरी क्या करता है दैट फोलियम लाइब्रेरी विल टेक द इनपुट ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ना लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड वैल्यू अवेलेबल है. okay, let's say that I have Delhi latitude and longitude value. Okay, I get the latitude and longitude value. Okay, and simply since it's entirely a different like module, or you can say it's an entire different library, what you need to do is you have to start with importing it. Okay, let's import Folium. Okay, so Folium is imported, and in the Folium we have a function called as dot map. ठीक है. तो ये डॉट मैप फंक्शन क्या करेगा, Folium डॉट कैपिटल एम है उसमें उसमें मैं लोकेशन पास कर दूंगी. ठीक है. ये तुम्हारे करिकुलम में नहीं है. इट वाज जस्ट आस्क्ड, दैट्स द रीजन आई एम शोइंग. सो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड पास कर दूंगी मैं. लैटिट्यूड 77 है. मुझे न्यू दिल्ली दिख रहा है. ठीक है. सो इसमें और भी मेट्रिक्स है जो आप पास कर सकते हो. ये फोलियम लाइब्रेरी से हम बेसिकली लाइक यू कैन प्लॉट द मैप एज वेल. ओके. अगर आप इसको 0,0 पे करोगे तो ये इक्वेटर पे प्लॉट करेगा. ठीक है. तो दिस इज लाइक वन ऑफ द लाइब्रेरी विच यू कैन बी यूज्ड. ओ माय गॉड, मुझे कितना टाइम लगा इसको याद करने के लिए. एनक्रिप्टर कोड, हेलो वर्ल्ड. ah I'm gonna check your encryptor part in the subsequent session. ठीक है. It is used in hacking course. Okay, is it? I wasn't aware. Anyways, ये आपका question है. I'm going to put this question in the chat as well. Come up with your encryption part. Anyways, you'll be getting this notebook. So I'm going to see you guys once you have a solution for this one. याद रख लो at least. मैं ये question आपको देना चाहती हूँ so that we have this to discuss in the next session. No, it's not allowing. ये Zoom नहीं करता. Ma'am will, yes, please take a screenshot, guys. Take a screenshot of the question and come up with solutions in the next session. I hope we are good to go now, and I'm going to see you guys in the next session. Bye bye. Oh, and whoever is upset, don't worry. We are going to have more sessions on to us, and especially like the ones who are facing problems. Sunday ko pura ka pura we are going to have a doubt solving. Okay, let's keep something for that as well, especially the regex part. We'll clear it up. Okay, kal I believe. क्योंकि I have to cover up list also and tuples dictionary sets. ठीक है. So these are the ones. Aurangzeb is still stuck on the nested loop, तो वो हम doubt solving में ले लेंगे. Okay, tomorrow. And what I'm gonna do is मैं chat off करके तुम्हें पढ़ाऊंगी अब से because मैं दुखी हो जाती हूँ. Bye bye. Take care, you guys. Folium was not a part of it. ठीक है. Folium was something which was just introduced क्योंकि किसी ने मुझसे question पूछा, so I thought of answering it. Okay, Folium is not a part of anything that you have to do it right now. Bye.